students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is more about Python. Learning aims: after studying this chapter, you will be able to iterative statements and infinite loop. In the previous chapter, we have learnt about some concepts of Python such as operators, modes, conditional statements, etc. And in this chapter, we will learn about iterative statements in Python. Sometimes a program requires multiple executions of a statement. This can be done with the use of loops. Loops help us to repeat one or more than one statement many times without actually having to type it multiple times. The benefits the user as loops reduce the number of instructions to be written for a program. Let's read about iterative or looping statements. तो conditional statements के बारे में हम पढ़ चुके हैं, but कभी-कभी execution के लिए multiple statements हमको Python पे देना पड़ता है, वो भी repetitive statements, बार-बार ना लिखना पड़े, उसके लिए हम यूज करते हैं loop statements का, जहाँ पे एक ही इंस्ट्रक्शन से मल्टीपल टाइम्स वो रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स अपने आप ही आ जाती हैं. So let's study about the iterative statements. Iterative or looping statements are those statements whose execution keeps on repeating till the given condition remains valid. A control variable is essential for the working of a loop. The value of the variable is increased or decreased with each statement until the final value is reached. There are two types of iterative statements, for and while. तो looping statements नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे आपको same type की statements बार बार लिखनी होती हैं. इसकी मदद से आपको बार बार वो लिखना नहीं पड़ेगा मैनुअली, वो आपका अपने आप ही लूप बना देगा और सारे स्टेटमेंट्स को लिख देगा. दो वर्ड्स आपके यूज होते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स में, फॉर एंड व्हाइल. Now for loop, we use the loop statement when we know the number of times a statement will be executed in a loop. This statement is also called the definite loop. अब definite loop या for loop आप तब यूज करते हो जब आपको पता होता है कि कितनी बार आपको वो स्टेटमेंट चाहिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो फिक्स्ड होता है. So syntax is for variable tag in value tag, loop statements and where in is a membership operator. तो variable और value tag आता है और इसके बाद आपके आती है loop statements. execute आप करते हो, वो सारे statements आपके loop में आ जाते हैं. Now the membership operators. Membership operators are important in controlling how a loop executes a statement. In and not in are two membership operators which are used in programming, out of which in is the operator which is primarily brought to use. Let's see how in operator works. So in operator, the function of in operator in a statement is to determine the sequence of the given values. It gives output in the form of true and false depending upon whether a given value is in sequence or not. The syntax is value of variable in, sequence of values. तो membership operators आपके पास in और in not के formats में होता है. इन सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है. इन ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है, जब आपको पता होता है कि कितनी बार आपका स्टेटमेंट आएगा और इसमें आपका ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स होते हैं. स्टेटमेंट ट्रू होगा, एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा. नाउ एग्जाम्पल 1 इज प्रिंट. Example of membership operator in, then you have x is equals to int which is input, write a value, print x in 20, 40, 60, 80, 100. तो input आप यहाँ पे values डाल देते हो, जितना value आप डालोगे उतनी बार आपका loop बनता जाएगा. So output क्या होगा, restart equal to restart colon c colon forward slash users forward slash rushy forward slash app data forward slash local. Example of membership operator in, write a value 20 if it is true. फिर आपका दूसरा आउटपुट निकल के आता है, वही सेम आपकी लाइन आ जाती है, restart c users rushy app date local. Example of membership operator in, write a value is 55. 55 में आपका आ जाएगा false. Now in and for loop, in the following program the operator in finds value for the variable x in the range of the values given. When the program is executed, it determines the presence of any value in the range. If a value is present, then the in operator assigns a value of the variable. When the program is executed, the values will be displayed as the output till the last value of the sequence is printed. तो in and for loop में आपका क्या होता है, जो in and for की values जो आपकी होती हैं variables में, in the x in the range, valuables आपकी given होती हैं, जब तक true statements आती रहेंगी तब तक वो print होता रहेगा, जहाँ पे false आ जाएगी वहीं पे आपका वो पूरा का पूरा execution बंद हो जाएगा. Now tech nuggets, information literacy. A control variable is also known as the counter variable. तो control variable को counter variable भी कहा जाता है. Let's see another example. Print. Example of membership operator in using for loop. For y in 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. Print y. Now output
Restart. C. Users Rushy app data local program Python. Example of membership operator in using for loop 10, 20, 30, 40 and 50. Y का मतलब ये वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, तो आपका इस स्टेटमेंट में आपका लूप बनता हुआ जाएगा. Then you have the range function. The range two brackets function in Python creates a range of numbers in the form of list. अब list आपको जब list के format में आपको जब range of numbers चाहिए होते हैं तब आपका use होता है the range two bracket functions. Syntax is range. The starting value is an integer number which defines the starting position of the variable. The final value defines the ending position and it is always less than the last value. The step value defines increment or decrement in value by 1 until the final value is reached. अब final value होती है the ending position आपका describe करता है और step value होती है वो increment या decrement value जब तक आपका final value attain नहीं हो जाता. Now in the following program we will specify a starting value of the variable and its final value. The program will determine whether the given variable is a part of the range of numbers given or not. If the variable is a part of the range, the output will be true, but if the variable is not a part of the range, then the output will be false. So यहाँ पर आपका जो starting और ending value दिया जाएगा, increment और decrement value के हिसाब से step values होंगी. अब अगर range of numbers में आपका वो number नहीं होगा, तो आपकी जो statement होगी वो false हो जाएगी, execution वहीं बंद हो जाएगा. लेकिन अगर ये आपका true हो जाएगा, range of numbers में से ही होगा, तो आपकी statement true आएगी, execution continued रहेगा. Let's see example 3. Print example of range function A 10, B 40, C is equals to 60, D is equals to 100. Print A in range 115, 1 and 15. Print B in range 60 and 70. Print C in range 20 and 35. Print D in the range 90 and 100. The output will be restart C users Rushy app. Example of range function true, false, false and false. अब ऊपर आपके जितने भी functions थे स्टार्टिंग रेंजेस में 10, 40, 60, 100 था. जहां जहां पे आपका 10, 40, 60, 100 होगा वहां पे ट्रू होगा, एग्जीक्यूशन आपकी चलती रहेगी. बट जहां पे आने के बाद आपका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा जहां पे रेंज ऑफ नंबर्स वैल्यूज डिफर कर जाएंगी. Now use of range function with for loop. We use the range function with for loop to create an array of output. An array is a data structure that holds a same type of data values. The for loop statement assigns values present in the range to the variable by executing the command in the increasing order until the last number of the range is reached. इसमें भी आपकी starting और ending values होती है, तब तक continue रहता है जब तक last value आपकी attain नहीं हो जाती. Example 4, print. Example of range function in for loop. For x in 10, 20, 30, 40, 50, 60, print x. Now output restart C users Rushy app beta local PRC. Example of range function in for loop is 10, 20, 30 and 40 और ऐसा आपका loop बन जाता है. Now let's have a look at a few more examples of using range function with for loop command. ये सारे examples आपके for loop command के हैं. Example 5, print example of range function in for loop. For x in the range 0, 30 and 2, print x. Output restart C users Rushy app beta local PRC. First line same रहेगी. Examples of range function in for loop 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. In the above program, the value of x is increased by 2. Each time the statement is executed, the loop continues until the last number of the range incremented by 2 is reached and assigned to its variable. तो इस वाले above example में incremental value आपकी 2 रही है तब तक जब तक आपका final value attain नहीं हो जाता, which was 20. Now example 6, print examples of range function in for loop. For x in range 30, 0 and minus 2, print x. Output restart C users Rushy app beta local PR. Example of range function in for loop is 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. यहाँ पे आपकी decremental value रही है by 2. Here the range of numbers is reversed from 30 to 0 and is decreased by 2 as the statement is executed in loop. Now there is while loop. While loop keeps executing a statement till a condition is met. Unlike for loop, here we don't need to know the number of times the loop is to be executed beforehand. There can be a single statement or a block of statement in while loop. अब while loop आपका तब तक execute होता रहता है जब तक आपका statement की condition नहीं मिल जाती है. यहाँ पर भी आपका भी यहाँ पे क्या difference होता है, यहाँ पे भी do not know the number of times the loop has to be created. Definite loop ये नहीं होता है. Now let's discuss further about the while loop. Statements which repeat another statement as long as the condition remains valid are a part of while loop. A variable is assigned an initial value according to the condition present and this variable is also known as the control variable.
It checks whether a statement is true according to the condition and keeps executing it till the statement remains the true. तो क्या होता है while loop में? स्टेटमेंट्स जो आपकी रिपीट होनी होती है दूसरे स्टेटमेंट के बाद, जब तक आपकी कंडीशंस सेम रहती हैं, आर अ पार्ट ऑफ द while loop. अ वेरिएबल इज असाइंड, इनिशियल वैल्यू आपकी असाइन करी जाती है ताकि कंडीशंस आपकी जो प्रेजेंट है उसके हिसाब से आपकी कंडीशंस मीट हो सके, एंड दिस इज नोन एज द कंट्रोल वेरिएबल ऑल्सो, एंड इट चेक्स इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट. इफ इट इज ट्रू द एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज, इफ इट इज नॉट ट्रू द एग्जीक्यूशन स्टॉप्स. नाउ सिंटैक्स इज while and the condition in the bracket. Statement, let's look at a few examples. Example 7, in the following program the value is 30 and it is assigned to the variable a. The condition of the program is not greater than or equal to 50 with the value increasing by 2. The program will continue to execute the statement until the value of a becomes more than 50 and the statement becomes untrue or invalid according to the condition. तो यहाँ पे condition क्या है? Not greater than 50 or equal to 50. तो यहाँ पे लूप बन जाएगा अपने आप जब तक की कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी, यानी कि 50 तक रहेगा. जहां से 50 एक्सीड कर गया वहां पे अनट्रू स्टेटमेंट यानी कि इनवैलिड हो जाएगा, एग्जीक्यूशन रुक जाएगा. For example, print, example of while loop, a is equals to 30, while a is equals to 50 not greater than 50. Print a is equals to a plus 2. Output, restart C uses Rushy. Example of while loop 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 and 50. 50 तक जहाँ पे आया 50 के बाद ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशंस आपकी मीट नहीं होंगी. स्टार्टिंग पॉइंट है आपका 30. Example 8, in the given program, the variable x is assigned to the initial value 40 with the condition being x not greater than 50. If the condition is valid, then the statement given after print is executed. The value of x increases by 1 each time the statement is executed. यहाँ पे x is equals to greater than 50. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 से ऊपर आपका स्टेटमेंट जाएगा. Print example of while loop, z is equals to 40. स्टार्टिंग पॉइंट आपका 40 से ऊपर हो जाएगा. While z is greater than 50. Print z into 2 minus 4, z is equals to z plus 2. Output, restart C uses Rushy. Example of while loop is 76, 80, 84, 88 and 92. Then example 9, in the given program we find the sum of multiples of 4 between 30 and 60. Then we multiply the sum by 2 and also increase the value of each multiply by 1. अब यहाँ पे आपका sum of multiples है of 4 between 4 and between 30 and 60 and the multiples of 4. बार बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक आपका एंड प्रोडक्ट नहीं मिल जाता. Print example of while loop with conditional statement, x is equals to 20, y is equals to 0, while x is greater than or equal to 90 if x divided by 4 is equals to 0. Print x plus 1, y is equals to y plus x into 2, x is equals to x divided by 2. Print the result is double inverted commas and y. Output, restart C uses Rushy add beta local program P. Example of while loop with conditional statement 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89. The result is 1944. Now example 10, a statement in Python can be false according to the condition present in the program and thus the loop terminates without printing the output. Observe the given program for example. अब स्टेटमेंट जो आपकी पाइथन में होती हैं वो फॉल्स भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है जो कंडीशन प्रेजेंट है वो लूप में टर्मिनेट हो रही है या मैच कर रही है या नहीं कर रही है. Now print output of while loop with false condition a is equals to 70 while a is smaller than or equal to 90. Print a is equals to a divided by 1. Output, restart C uses Rushy add beta local PR. Output of while loop with false condition. Now there is a quiz and these questions you have to answer on your own. Now you have the else statement. The else statement is added along with for loop and while loop as a method to check whether a loop has ended or terminated properly. It is not essential for a program to run but acts as an added measure for the execution of the program. अब else statement आपकी लगती है देखने के लिए कि loop और while statement आपकी proper तरीके से terminate हुई है या नहीं हुई है. Example 11, print output of while loop with the else statement x is 2, y is 2, while y is greater than or equal to 10. Print x into y, y is equals to y plus 1. Else print and then print loop is terminated. Output, restart uses Rushy app data local. Output of while loop with else statements 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 loop is terminated. तो आपको ये बताता है कि आपका जो loop पहले बना था वो अच्छी तरीके से terminate हुआ है या फिर नहीं हुआ है.
Then we have the infinite loop. This is an endless loop which consists of statements that get executed endlessly. This means that the condition present in the program cannot become false and thus the program will keep on running. This will continue unless the program is terminated. जब तक प्रोग्राम आपका टर्मिनेट नहीं होगा तब तक आपकी इनफाइनाइट लूप्स बनती रहेंगी. तभी एल्स कंडीशन आपकी यूज होती है देखने के लिए कि लूप टर्मिनेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है. The condition present in the following program is that the value of y should be more than 1. Since the value keeps increasing by 1, the value of y will always be more than 1. So the loop will keep executing the program because the condition will never be false. Now let's see the example. Print output of infinite loop, x is equals to 2, y is equals to 1. While y is smaller than or equal to 1, print x into y and y is equals to y plus 1. To terminate the loop, press Ctrl plus C. One such example of the infinite loops usage is the client server program where the server is required to endlessly wait and listen to the clients when required. अब Ctrl plus C का यूज किया जाता है लूप को टर्मिनेट करने के लिए. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनफाइनाइट लूप का, क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम, जहाँ पे सर्वर को वेट करना पड़ता है क्लाइंट का कि वो खुद मैनुअली कब इसको टर्मिनेट करेगा. Now activity time. Perform all examples during lab session. Explore information about the topic, how loops make programming easier. Make a PowerPoint presentation to explain the given topic. अब ये जितने भी examples हमने करे हैं, जब भी आप लैब में जाएंगे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और आपको बताना है कि लूप्स किस तरीके से प्रोग्रामिंग को और भी ज़्यादा ईजी कर देते हैं. Now let's sum up. Loops helps us to repeat one or more than one statement many times without actually having to type it multiple times. Iterative or looping statements are those statements whose execution keeps on repeating till the given condition remains valid. Membership operators are important in controlling how a loop executes a statement. In and not in are two membership operators. The range function in Python creates a range of numbers in the form of list, while loop keeps executing a statement till a condition is met. The else statement is added along with for loop and while loop as a method to check the whether a loop has ended or terminated properly. Infinite loop is an endless loop which consists of statements that get executed endlessly. तो loop statements होती हैं आपकी जब आपको बहुत सारी statements को repeat करना होता है but आपको manually वो नहीं करना होता है, तब आपकी loop statements use होती हैं. Explore yourself. While loop in Python is used for what type of iteration? आपका जो loop होता है while loop, जब आपका indefinite iteration होते हैं तब use होता है. Fill in the blanks. There can be a block of statement in the infinite loop. Write T for true and F for false for each statement. Loops require the statement to be executed, be written multiple times. Absolutely correct. Critical thinking. Suhani wrote a program in Python. While she ran the program, she noticed that it kept on running and does not terminate. She wants to terminate the program to modify it but does not know how. Suggest her the solution for her problem. तो प्रोग्रामिंग सुहानी स्टार्ट कर चुकी है, टर्मिनेट करना आ नहीं रहा है. कैसे टर्मिनेट करते हैं? जस्ट टेल हर. एल्स स्टेटमेंट होती है, वो आपको बता भी देगी किस तरीके से टर्मिनेट किया जाता है. Answer the following questions. Write about the usage of loops in Python. So basic सबसे पहला क्या आपका यूजेज होता है लूप का, जब आपको बहुत ही टिडियस प्रोसेस को इजी आउट करना होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो सेम तरीके की होती हैं उनको रिपीट करना होता है, तब आपका ये लूप्स यूज किया जाता है. TechFun, find and encircle 4 meaningful terms extracted from this chapter. See across, downwards and upwards. 4 words जो चैप्टर में हमने पढ़े हैं वो आपको इसमें दिखाई देंगे. Just encircle them. With that, we're done with this chapter. Go through this chapter properly once again and rest of the exercise questions, please do it yourselves.